So I will start. And this has started. Okay, great. Why am I confused? I have to open session 1, functions. Let me get the chat. Session 1, functions. Guys, मुझे 1 सेकंड देना बस. थोड़ा सा डिले हो गया है, I know. But I'll make it up, don't worry. इसे क्या हो रहा है? to I don't know why I'm not able to find my file. Let me just download this from here and let me just work on this only. हम कौन सी फाइल पे काम करते हैं? फाइल नंबर क्या था, फाइल नेम क्या था, कोई बता सकता है क्या? Sorry, I'm a little lost. Can anybody tell me the sheet name? शीट का नाम क्या था? 4.27. ठीक है. राइट क्लिक, डाउनलोड. I don't know, मेरे सारे फोल्डर्स में से वो फंक्शन वाला फोल्डर ही दिखाया है. कुछ मैं मूव कर रहा था, शायद तो उस टाइम पे डिलीट हो गया होगा. नॉट एन इशू. ठीक है. ग्रेट. इफ एरर्स हमने कर लिया था, काउंट एरर्स पे आते हैं. तो जिनके पास पुराना वर्जन है उनको ऑनलाइन वर्जन पे करना पड़ेगा ये. जिनके पास नए वर्जन है उनके इसमें वर्क करेगा ये. तो इस एग्जांपल में बेसिकली हमें चेक करना है, एंड लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस, एक सिंगल कॉलम में आपके पास चेक करना होता है आपको कितने एरर्स हैं, कितने एरर्स आ रहे हैं सिंगल कॉलम में, राइट. इफ एरर क्या करेगा, इट विल हेल्प यू रिप्लेस द एरर. इट विल हेल्प यू रिप्लेस द एरर. नाउ हाउ डू आई काउंट द इंस्टेंसेस वेयर देयर इज एन एरर हैपनिंग? देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड इज एरर. इज एरर, ठीक है. इज अर्नी इज एरर, ठीक है. आई विल चूज दैट. इट विल टेल मी ट्रू एंड फॉल्स. इट विल टेल मी ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है. मैं एक फंक्शन चूज करता हूँ, मैं इसको स्टेप्स में करके दिखाऊंगा आपको. इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, और फिर मैं फाइनली कंबाइन भी करके दिखाऊंगा. तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट आई वांट टू काउंट, or first I want to check if each row has an error or not. Wherever there is an error, I will get a true. Now in Excel, remember, when I say true and when I say false, right, the true is same as 1, false is same as 0. So if I say true into 10, I get a 10, and if I say false into 10, I get a 0. Because Excel में true और false जो है वो text नहीं है, वो numbers हैं. True और false जो है वो text नहीं है, numbers हैं. तो step 1 ये है, ठीक है. Alt H. स्टेप 1 है, मैं काउंट करूंगा किस रो में एरर्स है नहीं है. अब मुझे एक बार ये पता चल जाता है, उसके बाद व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू यूज स्टेप 2 इन व्हिच आई वांट टू यूज द सेम फंक्शन. प्लीज ट्राई दिस ऑन द ऑनलाइन वर्जन इफ यू आर ओनली सीइंग वन सिंगल वैल्यू. अगर ये करने के बाद आपको एक सिंगल वैल्यू दिख रही है तो आप ऑनलाइन वर्जन में करेंगे, ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू इज, मुझे काउंट करना है तो मुझे ट्रू और फॉल्स को टेक्स्ट से वैल्यूज बनाना पड़ेगा, which is 0 और 1. तो मैं क्या करूंगा, मैं just over here before I write this formula, I'll just put double negative. This is known as a double negative. Double negative डालने से क्या होता है, your true and false is converted into a 0 and 1. Your true and false is converted into a 0 and 1. Your true and false is converted into a 0 and 1. Okay. Your true and false is converted into a 0 and 1. Double negative डालने से एक बार मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप कर लेना एग्जाम्पल. सो ट्रू एंड फॉल्स डालने से इट इज कन्वर्टेड इनटू 0 एंड 1, ठीक है. अब फाइनली थर्ड स्टेप क्या होगा, जब मुझे पता चल गया है तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सारे नंबर्स को ऐड अप करना है. 0 ऐड अप होके तो 0 आएगा, और जो वंस हैं वो ऐड अप होके मुझे टोटल काउंट मिल जाएगा. तो आई जस्ट हैव टू से सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड टेल्स मी 2, टेल्स मी 2. I can do this in single step also, सिर्फ ये formula, but I just wanted to show you
कि अगर स्टेप्स में ब्रेक करूं तो कैसे होगा फॉर्मूला, अगर मैं स्टेप्स में ब्रेक करूं तो फॉर्मूला किस तरीके से दिखेगा। प्लीज हैव अ लुक एट द फॉर्मूला। अगर यहाँ कोई नया एरर आ जाता है तो यहाँ पे काउंट बढ़ जाएगा, यहाँ पे काउंट बढ़ जाएगा। आपको ये स्टेप्स में मैंने करके दिखाया है, जब आप ये फाइनल आंसर लिखोगे तो आपको पूरा रिजल्ट आएगा ही नहीं, आपको सिर्फ वो डायरेक्टली काउंट दिखा देगा अगर आप एक सिंगल फॉर्मूला लिखोगे। बट ऑलवेज ब्रेक योर फॉर्मूला डाउन इनटू डिफरेंट स्टेप्स, ऑलवेज ब्रेक योर फॉर्मूला डाउन इनटू डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, so that it is easier for you to get it, so it is easier for you to understand and calculate, ठीक है। Please try this example everyone, please try this example, please try this example everyone। I'll just check the chat as well if there are any questions। In what criteria? So I'm not applying any criteria। इस एरर का काम ही ये होता है कि वो चेक करता है कि जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू है तो वो बोलेगा फॉल्स, अगर वो एरर है तो बताएगा ट्रू। इस एरर का काम ही वही है। इफ आई से इक्वल टू is error, it checks whether a value is an error and returns it true and a false। It checks whether a value is an error and returns it true and a false। If you look at the definition, this is what the formula is doing। I'm just using that to get true and false। Then डबल नेगेटिव डालने से क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स जो है वो जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट जाता है। फॉल्स एक्सेल में जो है वो जीरो होता है, ट्रू जो है वो एक्सेल में वन होता है, ट्रू जो है वो एक्सेल में वन होता है। अभी आई स्टार्टेड लेट, दैट इज व्हाई दोज हु जॉइंड लेट आई एम एडिंग देम, ठीक है, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप, मैं किसी रीजन से लेट हो भी जाऊं, आप नहीं हो सकते लेट, ठीक है। एंड फाइनली मैं उसको सम कर रहा हूँ, बिकॉज जब मैं इसको सम करूंगा तो इट विल ओनली ऐड अप द वंस फॉर मी, इट विल ओनली ऐड अप द वंस फॉर मी, ठीक है। तो लेट मी, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू पुट अ स्क्रीनशॉट। मोहम्मद शाहरियार, आपको समझ आया? क्राइटेरिया नहीं है कोई, दैट फॉर्मूला इटसेल्फ इज चेकिंग ऑन इट्स ओन इफ देयर इज एन एरर और नॉट, ठीक है। थैंक यू नगमा फॉर द कंफर्मेशन। आप सबका भी अगर हो गया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो प्लीज पुट अ डन इन द चैट, प्लीज पुट अ डन इन द चैट, प्लीज पुट अ डन इन द चैट। ठीक है, perfect। Please come to the next sheet, count instances, count instances, please come to the next sheet। Very important example, ठीक है। I'll just minimize this too। And हम हमारा फाइनल फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, उसके पहले मैं आपको दो चीजें दिखाना चाहता हूँ। Just hide this। I want to show you total count and a running count, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। टोटल काउंट और रनिंग काउंट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले if I want to check, सबसे पहले if I want to check that in terms of the drivers that I have, in terms of the drivers that I have, ठीक है, in terms of the drivers that I have, how many drivers have gotten a complaint against them, कितने ड्राइवर्स के अगेंस्ट में कितनी बार कंप्लेंट आई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर टोटल काउंट देखता हूँ, मैं अगर टोटल काउंट देखता हूँ तो आई वांट टू चेक कि अमन जो है, अमन के पास पहली कंप्लेंट जो आई थी वो रिफ्यूज राइट की आई थी। फिर अमन के पास दूसरी कंप्लेंट जो आई थी वो आई थी अराइव लेट की। फिर अमन के पास जो तीसरी कंप्लेंट आई थी वो आई थी अनप्रोफेशनल की, राइट। अमन के पास टोटल 3 कंप्लेंट्स आई है। कुछ प्रोफेशनल, किसी किसी को सेम कंप्लेंट 2 बार हो सकती है, किसी किसी की सारी कंप्लेंट्स यूनिक हो सकती हैं, ठीक है, किसी किसी की कुछ डिस्टिंक्ट हो सकती है। नाउ अगर मुझे सिंपली फर्स्ट कॉलम पे चेक करना है कि अमन के अगेंस्ट में कितने कंप्लेंट्स आए हैं,
यानी अमन का नाम जितनी बार रिपीट होगा उतनी कंप्लेंट्स होगी अमन के अगेंस्ट में। तो अगर मैं सिर्फ कॉलम बी को अपना रेफरेंस बना के चलूं, मैं सिर्फ कॉलम बी को अपना रेफरेंस बना के चलूं, आई वांट टू काउंट how many times is one driver appearing, because that would mean if it is appearing one time he has only one complaint. If he is appearing three times he has three complaints. So wherever I see his name, I want to see the total count of how many times he has appeared in this list. So I will say equal to count if, I'll say equal to count if, I'll say equal to count if, and please have a look at the formula, then you can try this. I will select my criteria, control backspace to come back to the formula cell, function F4 to freeze, function F4 to freeze, B6 से B24 में freeze कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं freeze नहीं करूंगा और मैं formula को नीचे की तरफ drag करूंगा तो 24 will become 25, 26, 27, 28, B6 will become B7, B8, B9, B10, so on and so forth, and I will not have any values there. So I don't want my range to move. What do I want to count in this range? Can anybody tell me? अनम्यूट करके बताना प्लीज, मैं स्विच नहीं कर पाऊंगा। इस रेंज में जहां मेरा क्राइटेरिया ड्राइवर नेम कॉलम है, मैं क्या काउंट करना चाहता हूं, मेरा क्राइटेरिया क्या होगा? हाँ, अनम्यूट करके बोलो कोई भी। So you basically want to count the number of occurrences of of ठीक a है, single name, like सो माय not क्राइटेरिया विल बी, what is my criteria? You're correct. I want to count the, you're absolutely correct. I want to count the number of instances of a name. So if I choose my range, which is the names, my criteria will be this name itself. Because this Aman. list, yeah, the first name, मतलब starting from the very first name. Because I want to start from the top, right? अगर मैं कहीं नीचे से start करूंगा तो ये names skip हो जाएंगे. So what I'm doing is I'm basically, it's like running a loop. So what this formula is going to do is, as soon as I drag the formula down, it is going to tell me against each individual, because ये total count देगा मुझे, तो जहां जहां अमन होगा, if I quickly apply a filter, जहां जहां अमन mentioned है उसके अगेंस्ट में हर जगह आपको 3 मिलेगा, उसके अगेंस्ट में हर जगह आपको 3 मिलेगा, उसके अगेंस्ट में हर जगह आपको 3 मिलेगा। एक बार मैं फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, बड़ा सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डॉलर साइंस का कमाल है इसमें, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डॉलर साइंस आर, यू विल बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, फ्रॉम हियर इट इज चेकिंग B6 टू B24 में अमन कितनी बार आया है, तो देखिएगा 3 बार आया है। देन इज चेकिंग नमिता कितनी बार रिपीट हुई है इस पूरे लिस्ट में, देन इफ आई गो समवेयर एल्स इट इज गोइंग टू चेक फॉर दैट पर्सन। तो ऑल्दो अमन ऊपर काउंट हो चुका है, यहाँ पे फिर से काउंट करेगा, बिकॉज द फॉर्मूला का काम है टोटल काउंट देना, द फॉर्मूला का काउंट है टोटल काउंट बताना, ठीक है। तो ये होता है टोटल काउंट, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है टोटल काउंट में? ये प्रैक्टिस मत करो, ये प्रैक्टिस कर लो अभी, प्लीज टोटल काउंट एक बार प्रैक्टिस कर लो, प्लीज टोटल काउंट एक बार प्रैक्टिस कर लो। सर हमने तो बस अमन के लिए फॉर्मूला लिखा था ना, और फिर जो अलग अलग नेम है उसके लिए हमें अलग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप अगर ध्यान से देखो इस फॉर्मूला में, अगर मैं B6 को फ्रीज किया है क्या मैंने, क्या B6 फ्रोजन है? यस सर। B6 फ्रोजन है? No. नो। No. फ्रोजन का मतलब डॉलर साइंस लगे होते हैं उसमें। अगर मैं कोई भी एक्सेल में इक्वल टू लिखता हूँ, इक्वल टू एक्सेल चूज करता हूँ, जैसे ही मैं उसको ड्रैग करता हूँ बाय डिफॉल्ट उसका पोजीशन एक्सेल में रिलेटिव होता है। तो जैसे ही अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे रोज शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में भी अगर आपको मैं फॉर्मूला दिखाऊं, अगर आप फॉर्मूला देखोगे, जो B6 है वो B7, B8, B9, B10, B11 से लेके B24 तक जा चुका है। तो मैं सिर्फ अमन को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अमन मेरा फर्स्ट सेल है, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेल ओनली ना। इफ आई एक्सक्लूड दैट, if I exclude that, my count will not be correct. If I don't count अमन, तो इस रो के सामने तो मुझे आंसर ही नहीं मिलेगा ना। so that means अगर हम इसको फिक्सेट नहीं करेंगे डॉलर साइन से, तो जितनी बार अमन रिपीट होगा इतनी बार वो वन ही शो करेगा। हाँ, हमने फिक्स ही नहीं किया ना, 1 नहीं शो करेगा, 3 जो भी काउंट है बेसिकली। अगर अमन हाँ 3 हाँ। टाइम्स आ रहा है तो 3 दिखाएगा, नमिता 4 टाइम्स आ रही है तो 4 दिखाएगा, हर जगह जहां वो मेंशन है, क्योंकि मैं टोटल काउंट ले रहा हूँ ना। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि वो किस टाइम पे आया है, पहला इंस्टेंस है, दूसरा इंस्टेंस है, तीसरा इंस्टेंस है, मुझे बस देखना है टोटल काउंट, टोटल कंप्लेंट्स कितने हैं। Let me know if that makes sense, or I'll give you a different example to explain this.
Let me know. Let me know once this is done. Did everyone understand this? I'm simply see when I apply dollar signs, यानी B6 से B24 फ्रोज हो गया, फ्रोजन हो गया, तो मैं किसी भी सेल में जाता हूँ और मैं अगर किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ रहा हूँ उस रो में, वो उसको पूरे डेटा में सर्च कर रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इसलिए मुझे हर टाइम वो टोटल काउंट दबाएगा, बताएगा, क्योंकि मैं पूरे टेबल में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है. दैट इज व्हाट टोटल काउंट विल डू. नाउ इफ आई वांट टू काउंट द इंस्टेंसेस, so for example, Aman has appeared here for the first time. Then Aman has appeared here for the second time, and Aman has appeared here for the third time. Now I don't want the total count. I want a running count, which means I want the instances in which they are appearing. Right? The count of instances. कैसे करेंगे? मैं count if ही लिखूंगा. Please pay attention. मैं count if ही लिखूंगा. Now इसमें range is going to be very interesting. My range is going to be B6 to B6, जिसमें मैं पहला B6 को freeze करूंगा. मैं second B6 को unfreeze कर दूंगा. Function F4 है unfreeze करने के लिए. And my criteria is going to be B6 itself. Please look at this formula and tell me if it makes sense. Everyone, please look at this formula and tell me if it makes sense. I am searching B6 to B6. My criteria is also B6, so I'll get 1. When I drag the formula down, then I'm searching from B6 to B7. Similarly, when I keep on dragging the formula down to each row, I am searching only till that row. In the total count, irrespective of where I drag the formula, I was always searching in the entire list. In the running count, I am only searching till the row where the formula is dragged. I'm only searching till the row where the formula is dragged. I obviously get a 1 here because इस रो में अमन एक ही बार एग्जिस्ट करता है. फिर मैं अगर ड्रैग करूंगा तो नमिता के अगेंस्ट में मुझे 1 मिलेगा, ठीक है. और पीयूष के केस तक मुझे 1 मिलता रहेगा. जैसे ही मैं पीयूष के नीचे ड्रैग करता हूं, जहां नमिता एक सेकेंड टाइम अपेयर हो रही है, आपको 2 मिलेगा, बिकॉज नाउ इट इज सर्चिंग इन दिस टिल दिस लिस्ट till row number 11, and now Namita has appeared twice here. Right? So I'm counting the basis the instances. If I drag this down, this is going to tell you the instances. For example, Anupam जो है वो यहाँ पे एक ही बार आया है, पूरे लिस्ट में अभी तक एक ही बार आया है, आगे भी कभी रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए अनुपम के अगेंस्ट में आपको सिर्फ 1 दिखेगा. बट Namita has appeared a total of 4 times till row number 23, and hence this is how she is visible. Why am I freezing B6? Because मेरा जो फर्स्ट रो है मैं हमेशा वही से ढूंढूंगा ना. So my first row has to be frozen. If I don't specify a starting position, how will I continuously search? From the top? Because I would always want to come to the top and then come back down while searching. That is why I will use a running count, which tells me the instances. Let me know if this makes sense. Then इसके बाद जो actual example है, I will explain what you have to do. I would want you all to practice or try to write that example for 5 minutes. If not, then I'll explain. Madiha, Nihal, yes, you have a question? Yes. So, Ji, what I understand from this is, if we are counting like a running count, then ji, if I like, for instance, if I have a really big data, so if I count with this formula, then I'll know that like this particular data has occurred like this many times. correct. Yes. And if I use the total count formula, then I'll from the very starting, I'll know how many times the data has occurred. Yes, total में आपको total मिलेगा, running में आपको instance मिलेगा. Yes. अभी ये on its own it might not make a lot of sense. ठीक है, एक बार आप ये दोनों एग्जाम्पल कीजिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया दैट इज एब्सोल्युटली ओके. अब जो मेरा मेन एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, जिसके लिए जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमें वो करना है. पहले आप लोग बताइए ये दोनों एग्जाम्पल हो गए या नहीं. So what if you want to know the count only up to a particular cell? Then you drag till that cell only. Anyways, running count is up to a particular cell only, no? Samya, if I say row number 15, तो रनिंग काउंट तो row number 15 तक ही है.
So it is up to a particular cell itself. Total count जो है पूरे टेबल में होता है, because I'm freezing the entire table. Running count में only starting position is frozen. Ending position is not frozen. Ending position is not frozen. That's why when I drag the formula, it is up to a specific row itself. It is up to a specific row itself. I hope that clears your doubt. ठीक है. Perfect. Now everyone, we have also done count if s. ठीक है. तो अभी आपको I will explain the problem statement. I will give you exactly 5 minutes. It is 9:59. आपको मैं 10:05 तक का समय देता हूँ. आप ट्राई कीजिए लिखने के लिए. जिसका फॉर्मूला हो जाएगा लिखकर वो चैट में डाल दीजिए. अदरवाइज 10:06 को मैं आपको आंसर बता दूंगा. So I want to create a complaint occurrence. Basically now हमने सिर्फ एक कॉलम पे चेक किया. Now I want you to check and tell me against each driver, I want the count of the type of complaint. I want the count of the type of complaint. For example, अगर अमन के केस में refused right यहाँ एक बार है तो मुझे एक चाहिए. फिर अमन के केस में अगर let me filter and show you. Arrive late एक ही बार है ये complaint तो ये भी इसका भी वन आएगा. और unprofessional भी एक ही बार complaint है तो एक वन आएगा. ठीक है. And let's say if I take Ashneer का there are no complaints. और गजल ठीक है. So गजल को दो separate instances पे complaints हुई है which is the same complaint. तो यहाँ पे आएगा 1 and 2 because उस complaint के दो instances हैं. तो आपको मुझे count बताना है कि कितने different type के complaints आए हैं उस user के पास. कितने different type के complaints आए हैं उस user के पास, उस driver के पास. ठीक है. कितने डिफरेंट टाइप के कंप्लेंट्स आए. तो अगर अमन के केस में 3 सेपरेट कंप्लेंट्स आए तो मुझे 1 2 3 दिखना चाहिए. कोई भी कंप्लेंट रिपीट होगी तो उसके अगेंस्ट में मुझे वो सेम नंबर दिखना चाहिए. इज दिस क्लियर एवरीवन? इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर? प्लीज ट्राई दिस एवरीवन. प्लीज ट्राई दिस. Please try this everyone. If you're able to write the formula, you have to use the count if s. ठीक है. That is all I will tell you because दो कॉलम है. फॉर्मूला डाल दीजिए अगर हो गया तो चैट में. डबल क्लिक कीजिए, फॉर्मूला कॉपी कीजिए और चैट में डालिए. यहाँ चैट में डाल दीजिए, मैं चेक कर लूंगा फॉर्मूला सही है या नहीं. काउंट एफ एस B6 से B24, B6 C6 से 24, C6. मुशर्रफ आपको फ्रीज भी करना पड़ेगा. वकार आपने एक ही कॉलम चूज किया है. आपका लॉजिक सही है लेकिन आपने एक ही क्राइटेरिया रेंज और एक ही क्राइटेरिया दिया है. हमें दोनों कॉलम में चेक करना है. वकार यू आर ऑन द राइट ट्रैक बट एड द अदर क्राइटेरिया एज वेल. एड द अदर क्राइटेरिया एज वेल. जी नदीम, कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो मुशर्रफ, आपका फॉर्मूला is going to tell me the total count because although you have not frozen B24, जहां पे आपने B24 डाल दिया B6 से B24, तो जब आप फॉर्मूला ड्रैग करोगे तो B24 से B25 26 जाएगा. बट B25 B26 में तो वैल्यू है नहीं. तो बिना B24 फ्रीज किए भी आपने एक ही चीज कर दी. आपने ये कहा है बेसिकली, इफ आई जस्ट कॉपी अ फॉर्मूला,
if I copy a formula, yeah, what you're basically saying is that search from B6 to B24, which means search in the entire table. So applying a dollar sign here is not going to make any difference. Applying a dollar sign here is not going to make any difference. Applying a dollar sign here is not going to make any difference. So if I bring back Namita, it'll tell me the total count. It'll tell me the total count. It'll tell me the total count. I want to count the occurrences, right? Which means I want a running count. इंस्टेंसेस या occurrences के लिए मुझे रनिंग काउंट चाहिए, तो मुशर्रफ आपको आपका फॉर्मूला थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा. जहां पे आपने B24 और C24 लिखा है, वहां पे आप उसी रो का रेफरेंस दोगे, तो $B6 is to B6, $C6 is to C6. वकार आपका फॉर्मूला अभी भी आधा है. आपने एक ही क्राइटेरिया दिया है ना, आप एक ही कॉलम को रेफरेंस कर रहे हो, हमें दोनों कॉलम में चेक करना है. मैं नेम कॉलम में भी क्राइटेरिया चेक करना चाहता हूं और मैं दूसरे कॉलम में भी क्राइटेरिया चेक करना चाहता हूं, which is the complaint column. Samya, let us check your response. Okay, let us drag the formula down and let us double click. So you're saying that you are searching from B6 to B6, the value is B6, and from C6 to C6, and the value is C6. And if I, let's say, bring up Namita, because she has the most complaints, and this is correct. So payment refusal आपके पास 2 बार आया है, arrive date 1 बार आया है, and then payment refusal has come a 3rd time. Fantastic. Good guys. Excellent. Great work. ठीक है. बाकी लोग भी अपना फॉर्मूला डाल दीजिए. जो समिया ने फॉर्मूला पेस्ट किया है, that formula is absolutely correct. ठीक है. Vakar only selected one column. His approach was correct, but he only selected one column. And Musharraf also had his right approach. बस उनको जो लास्ट सेकंड रेफरेंस है फॉर्मूला में B6 की जगह B24 उन्होंने चूज कर दिया था. That was the only difference that he did, but the approach was correct. Correct. Mukhtar, your formula is also correct. Right? So the formula on the screen, everyone, this is absolutely correct. So what Mukhtar, what Samia have put, that is absolutely correct, right? ऐसा कोई है जिसको ये फॉर्मूला नहीं समझ आया है, प्लीज लेट मी नो. ऐसा कोई है जिनको ये फॉर्मूला समझ नहीं आया है, प्लीज लेट मी नो. Is there anyone who hasn't? जी इकबाल, please. You can unmute. Iqbal, you have a question? You can unmute and ask a question. Iqbal, if you have a question, you can unmute and ask. Please do once again. Sure. So I want to count that Aman के against में कितनी unique complaints आई है. So I will say count if S Aman, comma, मैं इसी रो में चेक करना चाहूंगा कि अगेंस्ट अमन कितनी टाइप की कंप्लेंट्स आई. बट मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम में चेक नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ उसका नाम थोड़ी ढूंढना है. मुझे तो उसका ऑल्ट एंटर दबाएंगे फॉर्मूला को डिफरेंट लाइन में ब्रेक करने के लिए. मुझे तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी ढूंढनी है ना, मुझे तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी ढूंढनी है, राइट. कॉमा C6 जिसमें दिस विल बी फ्रोजन. What I'm essentially doing here is, let me just put this enter and let me break this into 2 lines. What we're essentially doing here is Alt W. First, we're searching in B6 by freezing the first cell. How many times append appearing and how many times is refused right appearing. Count if और sum if s. Count if s और sum if s में जब आप कोई भी कंडीशन डालते हो, someone has asked me permission to edit the sheet. आपको शीट एडिट नहीं करनी है, राइट क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, या अगर आपको एक्सेल ऑनलाइन पे वर्क करना है तो डाउनलोड करके अपने वर्जन पे जाके अपलोड कीजिए. अपने वर्जन पे जाके एक्सेल ऑनलाइन के अपने वर्जन पे जाके अपलोड कीजिए. मैंने जो शीट अपलोड किया आपको उसको एडिट नहीं करना है. So what I'm essentially checking is, now this is essentially an AND condition, right? This is essentially an AND condition. If both of these are true, then I get a count. If both of these are absolutely true, then I get a count. So Aman and refused right is coming only one time. Then Namita and payment refusal is coming one time. Till up to a certain point, all of these are coming only one time. But Namita and payment refusal immediately comes here twice. Right? So यहाँ पे, because now I'm searching till row number 11 and in both the columns. So Namita and payment refusal is a combination जो पहले भी आ चुका है. जैसे ही वो second time आएगा, मुझे यहाँ पे count में 2 मिल जाएगा. मुझे यहाँ पर count में 2 मिल जाएगा. And if I drag the formula down,
Namita has actually got payment refusal thrice. Okay. Ghazal has got two times against her सेम कंप्लेंट. तो मैं इंस्टेंसेस काउंट करना चाहता हूँ बिकॉज मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था कि मुझे टोटल कंप्लेंट नहीं देखनी है. टोटल कंप्लेंट तो मैं यहाँ पे देख चुका हूँ. ठीक है. मुझे हर कंप्लेंट का यूनिक इंस्टेंस देखना था. हर कंप्लेंट का यूनिक इंस्टेंस देखना था. ठीक है. हर कंप्लेंट का यूनिक इंस्टेंस देखना था. दैट इज वाई यू हैव टू डू इट दिस वे. दैट इज वाई यू हैव टू डू इट दिस वे. व्हेन वी डू वी लुक अप इन वन ऑफ द कमिंग सेशंस, तब इसका आपको बहुत यूज लगेगा बिकॉज व्हेन यू डूइंग अ वी लुक अप ऑन डुप्लीकेट वैल्यू, उस केस में रनिंग टोटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उस केस में रनिंग टोटल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इज दिस क्लियर एवरीवन? मैं ना नया फोल्डर अपलोड कर रहा हूँ. मैं नया फोल्डर अपलोड कर रहा हूँ हमारे ड्राइव लिंक में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ठीक है. इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स. हो गया अपलोड. एंड इस फोल्डर को डाउनलोड कीजिए प्लीज. इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाले पूरे फोल्डर को डाउनलोड कीजिए प्लीज. फाइल को ऑनलाइन ओपन नहीं करना है, फोल्डर को डाउनलोड करेंगे. फोल्डर को डाउनलोड करेंगे. फोल्डर को डाउनलोड करेंगे. फोल्डर को डाउनलोड करेंगे प्लीज. कंडीशनल स्टेटमेंट्स मैंने अभी जस्ट ऐड किया है. प्लीज डाउनलोड दैट. मैं एक बार ग्रुप में लिंक भी पेश कर देता हूँ. डन गाइस, डाउनलोड कर लिया आपने? हैव यू डाउनलोडेड द फोल्डर? उसमें बस 5.1 प्रॉब्लम को ओपन कीजिए. 5.1 प्रॉब्लम को ओपन कीजिए. काउंट वाला शीट आप क्लोज कर दीजिए. काउंट वाला शीट आप क्लोज कर दीजिए. इसमें सबसे पहले शीट पे आ जाइए इफ. सबसे पहले शीट में आ जाइए इफ. We do a few examples on conditional statements. मैं आपको कुछ कुछ करा दूंगा, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना जो रिमेनिंग है. जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा दूंगा. नाउ आप लोगों में से किसी ने इफ कंडीशन पहले लिखे हैं कभी? whether it is in Excel or any other language, Python में हो सकता है, किसी और टूल में हो सकता है. I'm assuming some way or the other you have written an if statement, right? Somewhere else. जिन्होंने एक्सेल पे काम ही नहीं किया और किसी टूल पे काम ही नहीं किया, दैट इज डिफरेंट. बट दोज हैव वर्कड ऑन सम टूल, यस, इन प्रोग्रामिंग, परफेक्ट, राइट. सो उसमें जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करता है, यहाँ भी वैसे ही वर्क करता है. यू चेक फॉर अ लॉजिक. इफ द लॉजिक इज ट्रू यू डिस्प्ले अ वैल्यू. इफ द लॉजिक इज फॉल्स यू डिस्प्ले अ वैल्यू. एक्सेल में भी एग्जैक्टली यही होता है. तो मैं फर्स्ट शीट पे हूँ इफ पे. प्लीज हैव अ लुक एट द एग्जांपल. मुझे चेक करना है that if the current status is 0, discontinued is 0, तो मैं yes करूंगा, else मैं no करूंगा. So I will say equal to if logical test is equal to 0, then yes, else no, else no. ठीक है, else no. और सिंपली मैं फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करूँ. सिंपली मैं फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा. ठीक है, वेरी सिंपल. एक इफ स्टेटमेंट में एक्सेल में 3 आर्गुमेंट होती है. सबसे पहली आर्गुमेंट होती है व्हाट इज द लॉजिकल टेस्ट. सेकंड आर्गुमेंट होती है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू.
एंड थर्ड आर्गुमेंट होती है व्हाट इज द वैल्यू इफ फॉल्स। जो टेक्स्ट आप अगर फॉर्मूला में डिफाइन करते हो, आपको टेक्स्ट को फॉर्मूला में डिफाइन करना है इन डबल कोट्स। आपको टेक्स्ट को फॉर्मूला में डिफाइन करना है इन डबल कोट्स, ठीक है, इन डबल कोट्स। Fairly simple, please try it one time. Should not take you more than a minute to do this. मैं फॉर्मूला भी डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। वेरी सिंपल, आपके पास एक लॉजिक है, आप चेक कर रहे हो कि वो लॉजिक ट्रू है या फॉल्स है। आपके पास एक लॉजिक है, आप चेक कर रहे हो कि वो लॉजिक ट्रू है या फॉल्स है। आप चेक कर रहे हो कि वो लॉजिक ट्रू है या फॉल्स है। Let me know once this is done. ठीक है, ऐसा कोई है जिसने इफ कंडीशन कभी नहीं लिखा था, उसको समझ नहीं आया तो प्लीज बताइए, ठीक है, प्लीज पुट इट इन द चैट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। If you don't ask a question, I'll assume that all of you have understood. ठीक है, now let's come to the next one, which is if with and. If with and. Now I want to find the quick orders. So I want to check two conditions. If the order is more than 5 days, if the order is more than 5 days, right, from the required date, if the order is more than 5 days from the required date, okay, or else I want to check, and I also want to check if it has been shipped more than 20 days. तो मेरे पास दो कॉलम्स है, उनको चेक करना है। If the order date is greater than, is more than 5, if the order date is more than 5 compared to the required date, right, and if the shipped is more than 20 compared to the order date, right. तो इसमें मुझे दो ऑपरेटर्स डालने हैं, मुझे दो लॉजिक्स डिफाइन करने हैं। इस केस में मुझे दो लॉजिक्स डिफाइन करने हैं। तो जो इफ कंडीशन है उसमें आप बाय डिफॉल्ट कितने लॉजिक डिफाइन कर सकते हो? एक। जो इफ कंडीशन है उसमें बाय डिफॉल्ट आप कितने लॉजिक डिफाइन कर सकते हो? एक ही लॉजिक डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको दो या दो से ज्यादा लॉजिक डिफाइन करने हैं और वो सारे लॉजिक ट्रू होने चाहिए, अगर मैं 10 लॉजिक डिफाइन करता हूँ और 10 के 10 लॉजिक ट्रू होने चाहिए, इन दैट केस आई हैव टू यूज एन एंड फंक्शन फर्स्ट। आई हैव टू यूज एन एंड फंक्शन फर्स्ट। आई हैव टू यूज एन एंड फंक्शन फर्स्ट। द एंड फंक्शन allows me to add multiple logics inside the if condition, right? And it will check if all those logics are true. Even if one of them is false, it will return a false, right? It will return a false. Right, so I want to see if the required date is more than the order date, is greater than the order date. I want to see if the required is more than the order date. That is my condition 1. And condition 2, I want to check shipped order date say will obviously be more. So I want to check if the difference between the shipped and the order date, so bracket में डाल दूंगा, difference between shipped and order date is greater than 20. मैं simple BODMAS, I have to apply a bracket. If the difference is greater than 20, if the difference is greater than 20, right? If the difference is greater than 20. I'll close my and bracket. यहाँ पे आपको and का bracket close करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको and का bracket close करना पड़ेगा। जैसे ही आप and का bracket close करते हो, you will then have to define value of true and value of false. इस केस में we'll write a simple yes and a simple no. We'll write a simple yes and a simple no. A simple yes and a simple no. Press enter. एंड जहां पर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, जहां पर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, C7 is, यहाँ पे I'll have to calculate the difference of C7 minus B7, difference of C7 minus B7 is greater than 5. So nowhere are the orders being satisfied, which is okay.
बट अगर आपको मल्टीपल लॉजिक्स डिफाइन करना है, आपको अगर मल्टीपल लॉजिक्स डिफाइन करना है, ऑल्ट एंटर में यूज करूंगा फॉर्मूला को 2 लाइन में ब्रेक करने के लिए, नो अदर रीजन, ओनली फॉर रीडेबिलिटी पर्पसेस, नो अदर रीजन, ओनली फॉर रीडेबिलिटी पर्पसेस। सो अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट डिफाइन करने हैं इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट, तो आप इस तरीके से करोगे, तो आप इसको इस तरीके से करोगे, ठीक है। ये होता है एंड में आप जितनी कंडीशन अप्लाई करोगे, 2, 10, 20, whatever number of conditions you supply within an and, all of them have to be true. Even if one of them is false, the entire condition will become false. The entire logic will become false. The entire logic will become false. Right? The entire logic will become false. Perfect. What about the others? Any questions so far? What about the others? Any questions so far? ठीक है, great. और में क्या है? I'm going to check if the order is cancelled or discounted. I want to check if the order is cancelled or discounted. I want a simple yes or no. I want to find my bad orders. I want to check if the order is cancelled or discounted. यानी 0 से ज़्यादा डिस्काउंट है, तो और कंडीशन डालेंगे हम यहाँ पर, तो we'll simply say that equal to if. अब जब मुझे चेक करना है if either of the conditions is true, either one out of 2, 3, 10, 15, either one of the conditions is true, I'll use an or. I will use an or. I have to check if the order is cancelled. That is the first condition. So I have to check if it is cancelled or discounted. So I want to check cancelled is equal to yes, and if it is discounted it should be greater than 0. तभी डिस्काउंट है, अगर 0 है मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, अगर 0 है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। और का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, सिंपल yes, double quotes close, and simple no. I'll just break it into different lines इस तरीके से and close the if bracket. अब इसमें अगर कहीं ऑर्डर कैंसिल हुआ है और डिस्काउंट नहीं है तो यस होगा, बिकॉज आइदर वन ऑफ देम हैव टू बी ट्रू। अगर दोनों ही ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा ऑब्वियसली, बट दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो आपको यस आएगा, तो आपको यस मिलेगा, तो आपको यस मिलेगा, तो आपको यस मिलेगा, ठीक है, तो आपको यस मिलेगा। एंड की तरह है, सिंटैक्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला को लिखने का, लॉजिक डिफरेंट है। और में आप चेक करते हो कि आइदर वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू, एंड में आप चेक करते हो इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, एंड में आप चेक करते हो इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। If all the conditions are true. Please do this, everyone. Please do the meeting. Please do the example, everyone. Done. तो है ना, ये दोनों अभी स्किप कर देते हैं, मैं इन पे बाद में आता हूँ। अभी आप आइए इफ विथ एंड एंड और पे, आइए इफ विथ एंड एंड और पे, इफ विथ एंड एंड और। Also, is it okay if I stretch the call till 10:40? Is that okay with everyone if I stretch the call till 10:40? ठीक है, cool. Please come to if with and plus or. Please come to if with and plus or. Now here, please read this condition. Please read this condition first. Please read this condition. So I'm saying that one of the conditions has to be met. I'm saying one of the conditions has to be met. Condition 1 is on the basis of tenure.
Condition 1 is on the basis of tenure, and condition 2 is on the basis of application and type of customer. Application and type of customer. Should be a prime customer away. Prime customer. Now, if I have to check if one of the conditions has to be met, one of the two conditions has to be met, I will use an or. I will use an or. But if you have to look carefully, my second condition has two subconditions. My second condition has two subconditions. My second condition has two subconditions. So I have to use and or together. But since my larger condition or my higher condition is a or, so I will start with an or. So I'll say if, I'll say or, what is my logical test one? Customer has been with the company for at least 5 years. So tenure will be greater than equal to 5. Greater than equal to 5. I'll put a comma. Now, since condition 2 has two sub conditions, which both have to be true, I will start with an and here. मैं और के अंदर एक and open करूंगा. जिसमें I will say the achievement should at least be 100%. So achievement should be greater than equal to target. ठीक है, एक condition ये हो गई. And the customer should be a prime customer, so equal to D12 is equal to prime, double quotes में. D12 is equal to prime and close my bracket. ये मैंने and का bracket close किया, ये मैंने और का bracket close किया. Double quotes में eligible, not eligible. एक बार फॉर्मूला देखते हैं. मेरे पास दो कंडीशंस हैं. लार्जर कंडीशन है और, सो आई स्टार्ट विद एन और. आई स्टार्ट विद एन और. एंड उसके अंदर जो मेरा सेकंड कंडीशन है उसमें टू सब कंडीशंस थी, तो उनको मैंने एंड में डाल दिया. सो व्हेन बोथ ऑफ दीज आर ट्रू, व्हेन बोथ ऑफ दीज आर ट्रू, दिस विल कम आउट टू बी अ ट्रू, दिस विल कम आउट टू बी अ ट्रू. एंड इफ दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, द लार्जर कंडीशन विल बी ट्रू. If both of them are incorrect, if both of them are false, तो larger condition will be false. If and में दोनों में से एक कंडीशन, अगर कस्टमर प्राइम नहीं है बट उसने टारगेट अचीव किया है, कस्टमर प्राइम नहीं है बट उसने टारगेट अचीव किया है, उस केस में ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो I'll just drag the formula down. I'll just drag the formula down. I'll show you the formula text as well. Please have a look if it is clear or not. If it is clear or not. गुरु सर को काउंट बताओ. 49 स्टूडेंट्स है. चलो मैं डाल देता हूँ. ठीक है. सो माई लार्जर कंडीशन इज एन और. माई लार्जर कंडीशन इज एन और इस केस में, इसलिए मैं जो है पहले और से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो what I'm essentially doing here is if a customer has achieved his target, ठीक है, if a customer has achieved his target but is not a prime customer, let's say वो नॉन प्राइम कस्टमर है, ठीक है, उस केस में भी एलिजिबल होगा. बिकॉज एंड में तो ये दो कंडीशन है, बट ये तो और हो गया ना, ये तो फॉल्स हो गया. तो मेरा दूसरा कंडीशन है टेन्योर. अगर ये भी गलत हो जाएगा तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा, तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा. लेकिन अगर किसी का टेन्योर नहीं है 5 years बट उसने टारगेट अचीव किया है और उसने प्राइम कस्टमर भी है वो, तो उस केस में एलिजिबल हो जाएगा. सो अगर टाइप और अचीवमेंट वाले कंडीशन ट्रू है और टेन्योर नॉट ट्रू है, तो ओवरऑल कंडीशन विल बी ट्रू. इफ टेन्योर इज 5 and the other two conditions are not met, that is absolutely okay. The larger condition will also be a true. The larger condition will also be a true. Right? Please do this, everyone. Please do this, everyone. ये जो नेस्टेड इफ है और इफ एस है, ये आप जाके प्रैक्टिस कर लेना. अगले सेशन में आपको डाउट होगा तो पूछ लेना. मैं अभी बाकी दो कराना चाहता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Let me know if this is done. Okay, I'll wait for others also to complete.
ठीक है, प्लीज कम टू द नेक्स्ट शीट विच इज इफ विथ एंड प्लस और, इफ विथ एंड प्लस और। अब इसमें all my previous conditions have to be checked, but if the person is eligible, I want to give them a, क्या कहते हैं, I want to give them a incentive। ठीक है, तो मैं पिछले फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो फॉर्मूला एज इट इज होगा, बस उसमें जो वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स है वो चेंज होगा। तो मैं पिछली शीट से फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब कुछ सेम है, ऑल द प्रीवियस कंडीशंस आर ट्रू, वेर एवर द कस्टमर हैज गॉटन अ, क्या कहते हैं, इंसेंटिव, और वेर एवर ही इज एलिजिबल, I don't, what basically wherever it is true, I don't want to write the word eligible. I want to rather calculate incentive. I want to rather calculate incentive. But मैं incentive पे एक ceiling लगाना चाहता हूँ of 20. Incentive में ceiling लगाना चाहता हूँ of 20. What I mean by that is, if the person is, let me just shift this to the right. You don't have to do this. This will be, यही होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका कंट्रोल शिफ्ट 1 अचीवमेंट परसेंटेज पे मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 20% इंसेंटिव देना है, वॉट एवर इज द अचीवमेंट परसेंटेज। ठीक है, अचीवमेंट, सॉरी नॉट परसेंटेज, सॉरी अचीवमेंट वैल्यू, क्या कर रहा हूँ मैं, अचीवमेंट वैल्यू पे मुझे 20% देना है। ठीक है, अब अचीवमेंट वैल्यू पे 20% सबका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, किसी का 24 आ रहा है, किसी का 23 आ रहा है, जिसने अचीव नहीं किया उसका तो कम ही आएगा। ठीक है, जैसे इसका 16 आ रहा है, बट जिसने अचीव किया है, for those who have some achievement, I want to give them 20% of their achievement value, but with a ceiling of 20. मतलब maximum जो incentive देना चाहता हूँ मैं 20 देना चाहता हूँ। So cases where a person's achievement is higher, I don't want to reward him more than 20, I don't know, dollars or whatever. Right? So how will I do it? Please have a look. फॉर्मूला पूरा सेम होगा, बस जो चीज चेंज होगी वो है, आई डबल क्लिक, जो ये एलिजिबल वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मैं बोलूंगा मिनिमम, यहाँ पे एल से मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे एल से मिनिमम। फॉर्मूला जब कॉपी करोगे तो डबल क्लिक करके कॉपी मत करना, हाँ डायरेक्ट पेस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल नॉट से एलिजिबल, आई विल से मिनिमम। सो आई वांट अ मिनिमम ऑफ 2 numbers, राइट। वन नंबर इज गोइंग टू बी 20, दूसरा नंबर क्या होगा मेरा यहाँ पर, 20% ऑफ, ठीक है, और या फिर अचीवमेंट इंटू 0.2 विच इज द सेम एज 20%। नाउ C8 का अचीवमेंट कितना होगा 0.2 के हिसाब से, इट विल बी 24.28, बट 24.8 और 20 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 20, तो ऑटोमेटिकली 20 का कैप लग जाएगा, और जिसकी वैल्यू 20 से कम है, एनीवेज इसका अचीवमेंट 20 से कम है, तो उस केस में उसका लोअर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेट मी जस्ट शो द फॉर्मूला। जहां पे कंडीशन मेट हो रही है, वहां पे सेल्स पर्सन का जो अचीवमेंट है 20%, वो आ रहा है 15.2, मेरा मैक्सिमम कैप है 20 का, जब उसका अचीवमेंट आ ही रहा है 15.2, आई विल नॉट गिव हिम 20 अननेसेसरी, राइट। बट इफ समवन हैज अचीव्ड मोर देन 20, if someone has achieved more than 20, in that case I only want to give him 20, I don't want to give him a single penny above 20, I don't want to give him a single penny above 20, I don't want to give him a single penny above 20। ठीक है, I don't want to give him a single penny above 20। सेम सिमिलर एग्जांपल, जस्ट जो क्राइटेरिया था उसमें आपने एक ट्वीकिंग कर दिया है, जो क्राइटेरिया था उसमें आपने एक ट्वीकिंग कर दिया है। प्लीज हैव अ लुक एट द एग्जांपल एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। इसके बाद लास्ट वाला एग्जांपल है जो आपको ऑनलाइन वर्जन में करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, लास्ट वाला जो एग्जांपल होगा वो लेट फंक्शन यूज करते हुए है, सो वो आपको ऑनलाइन वर्जन में करना पड़ेगा अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो। ठीक है,
तो प्लीज अपनी इस फाइल को ऑनलाइन वर्जन में अपलोड कर दीजिए। Let me know if you understood what we did here. If not, do let me know. I will re-explain or rewrite it for you. Right. Once it is done, please put it done in the chat. पर हो जाएगा तो डन डाल दीजिए चैट में, so that I know that I can go to the next example. Perfect. Please come to the last sheet using let. Please come to the last sheet using let. Very interesting. Now मैं आपको रियूजेबल फंक्शन की बाद में दिखाऊंगा एक्सेल में, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि एक्सेल में जो फंक्शंस होते हैं ना, उनको मैं उनमें वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकता हूँ। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हो तो आपको पता होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। इट्स लाइक डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, यानी किसी एक वैल्यू को एक नेम के अंदर स्टोर करना ताकि इट बिकम्स मोर रीडेबल एंड इजी टू एक्सेस। तो यहाँ पे मेरी सारी कंडीशन सेम होगी, बस इस फॉर्मूला को मैं बहुत डिफरेंट तरीके से लिखूंगा। प्लीज एक बार देखिए, मैं मेरा फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ वैसे, और उसको यहाँ कहीं पेस्ट कर देता हूँ। Let me just take a screenshot so that we can refer it if required. Minimize that. It's too large. ठीक है, perfect. Now इस फॉर्मूला में अगर मैं आपको पूछूं कि E8 क्या है, C8 क्या है, तो रीडेबिलिटी नहीं है, रीडेबिलिटी बहुत कम है। सबसे पहले लेट में क्या होता है, आप लिखोगे इक्वल टू लेट। आप एक बार देखिए पहले क्या कर रहा हूं मैं, फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं भी करोगे, दैट इज ओके, यू विल हैव द रिकॉर्डिंग, गो बैक एंड वॉच द रिकॉर्डिंग, बट जस्ट लुक एट द एग्जांपल. Let allows you to create variables inside your calculation so that your formula becomes more readable. What I mean by that is, how many variables do I have here, everyone? How many variables do I have here? How many variables do I have here? Unmute करके बताइए अगर आपको पता है तो. How many variables do I have here? 4. Okay, so I have tenure, type, achievement, and target. Correct? These are the 4. So what I'll do is I'll say that my tenure is this value. Okay. And I'll say that my type is this cell. And I'll say my achievement is this, and my target is this cell. बेसिकली पहले आपको नेम देना है, फिर आपको सेल वैल्यू चूज करनी है कि उस नेम की वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है। तो इससे क्या होता है, यू आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल। अब मैं आगे जब फॉर्मूला लिखूंगा, मैं यहाँ E8 C8 ये सब नहीं लिखूंगा। I will literally use these words. I will literally use these words. Type will not work because type is a function also. तो आप वो सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप typ कर लेना उसको, आप उसको typ कर लेना, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, पहले मैं नाम बना रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ नाम कहाँ एग्जिस्ट करता है। मैं बोल रहा हूँ टाइप, टाइप कौन से सेल में है, D8 में। अचीवमेंट कौन से सेल में है, C8 में। टारगेट कौन से सेल में है, B8 में। ये जो फॉर्मूला के अंदर मैं नेम्स डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, वो इसी सेल में एग्जिस्ट करेंगे, सेल के बाहर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं कहीं लिखता हूँ इक्वल टू टेन्योर तो कुछ मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। दे एग्जिस्ट ओनली इनसाइड दिस सेल, दे एग्जिस्ट ओनली इनसाइड दिस सेल। मेरे पास और एक वेरिएबल है जो है सीलिंग। तो सीलिंग का अगर वैल्यू फिक्स्ड है तो मैं उसको, सीलिंग भी एक फंक्शन होता है, तो मैं इसको बोल देता हूँ मैक्स वैल्यू, विच इज लाइक द मैक्स इंसेंटिव। उसको मैं बोल देता हूँ दैट इज द, उसका वैल्यू है 20, बिकॉज वो कहीं सेल में है नहीं। या अगर मैं उसको किसी सेल से रेफर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक सेल से उसको रेफर कर सकता हूँ, ठीक है, F6 से।
Now, once I've given all the names, तो मैंने टेन्योर का एक नेम दे दिया, टाइप का नेम दे दिया, अचीवमेंट, टारगेट और मैक्स वैल्यू का. मैक्स वैल्यू इज माई नथिंग बट माई सीलिंग वैल्यू. ऑल्ट एंटर दबाता हूं मैं. नाउ what do I want to check first? That if my, open the or bracket, if my tenure is greater than or equal to 5 and type, देख रहे हो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वो TYP जो टेक्स्ट मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको मैं फॉर्मूला में यूज कर पा रहा हूँ. टाइप इज इक्वल टू प्राइम and achievement is greater than equal to target. The whole point of using this is that it makes your formula more readable. It makes your formula more readable. It makes your formula more readable. और कोई point नहीं है इसका, ऐसे भी आप लिख सकते हो. But if you're able to write this, this makes your formula more readable, easier for a large audience or different users to understand. Target, I'll close my and bracket. I'll close my or bracket. Okay. I'll put a comma. I'll press Alt Enter. I'll press Alt Enter. अब मुझे चेक करना है वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स. वैल्यू ट्रू में हमने क्या चेक किया था? मिनिमम ऑफ आइदर द मैक्स वैल्यू विच इज 20, जो हमने यहां में लिखूंगा, अभी अभी लिखा नहीं है मैंने, और अचीवमेंट इनटू 0.2, achievement into 0.2, and I close my bracket, and I close my bracket. इसको भी if I put it in brackets will be better. And value false होगा not eligible. फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है. सबसे पहले मैंने नेम डिक्लेयर कर दिए हैं. सबसे पहले मैंने क्या किया है? नेम्स डिक्लेयर कर दिए हैं ताकि मैं उन नेम्स को फॉर्मूला में रीयूज कर सकूं. मैं इफ का ब्रैकेट क्लोज करूंगा यहां पर और मैं लेट का ब्रैकेट क्लोज करूंगा यहां पर, एंड आई प्रेस एंटर. आई विल गेट द करेक्ट रिजल्ट. व्हेन आई प्रेस एंटर आई विल गेट द करेक्ट रिजल्ट. एंड आई कॉपी दिस फॉर्मूला डाउन हियर. इसको मैं 20 कर देता हूं अभी, ताकि ये जो पहला वाली 24 है वो चेंज हो गया. ऑल्ट एच डब्ल्यू. If you're not able to write it right now, that is okay. We're almost at the session's end as well. आप लोग को लिखना है तो लिखिए. I don't have any problem. If you want to write it, please go ahead and write it. Okay. But before you write it, just look at the example and tell me if you have any questions. Remember, ये जो names है ना वो इसके अंदर ही exist करते हैं. मैं equal to tenure कहीं बाहर लिखूंगा तो Excel को नहीं पता tenure क्या है. उस फॉर्मूला के अंदर ही वो exist करता है. जो नेम मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो उसी इन्वायरमेंट में, सेल के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है. जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उसी सेल के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है. फॉर्मूला को एक बार चार्ट में भी डालता हूं. मैं फॉर्मूला को एक बार चार्ट में भी डालता हूं. एक बार आप फॉर्मूला देखिए. कुछ डाउट है तो पूछिए. अभी लिखने की जरूरत नहीं है. आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप जाके लिख सकते हो. ठीक है. बट अभी प्लीज टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला. If you understood the formula, that is important. I put the formula in the chat as well, and the formula is here as well. If it is all clear, please put all clear in the chat. If it is all clear, please put all clear in the chat. फैंटास्टिक. तो लेट इज अ वेरी एडवांस टॉपिक. अभी तो मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिखाया इसमें, बट आगे जाते हुए ना मैं आपको कस्टम फंक्शन बनाना भी सिखाऊंगा इन एक्सेल, which is using lambdas. So अभी तक whatever we had planned ना, we are on track with it. जैसे आज we had this was our fourth session if I'm correct. Is this our fourth session or third session? Third. The third session. ठीक है. तो हम लोग एक टॉपिक हमने पहले ही कवर कर लिया, which is okay. We have a lot of other topics to cover. So the idea is that within the 10 sessions जो भी most important है हम वो सारा कवर कर लें. जो भी most important है वो सारा कवर कर लें. So next में I would want you to go back and to practice nested if and if s, nested if s and let. ये practice कर लीजिए. I'll stop the recording for now. Stop recording.